Good morning, students. Today we are going to discuss the last topic of your chapter, that is power in AC circuits. Here we will discuss two circuits. In the first circuit we will consider a circuit which only contains a resistance, and in the second part we will consider a circuit which contains a resistor and an inductor. We know that हमने पहले पढ़ा है कि जब भी अगर कोई सर्किट है जिसमें ओनली रेजिस्टर है तो उसमें जो वोल्टेज है और जो करंट है दे आर इन फेज ईच अदर. सो अगर हमारी जो एसी वोल्टेज अप्लाइड है वो है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, देन द करंट इन द सर्किट विल बी इक्वल टू I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. अब हमें पता है फॉर्मूला फॉर पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू I. तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल गेट V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर द फुल कंप्लीट साइकिल. कंप्लीट साइकिल मीन्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल T. So we will find the average value by the formula 1 by t integration 0 to t sin square omega t dt. अब हमें पता है जब भी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की तो हम उसे डायरेक्टली नहीं कर सकते. फर्स्ट वी विल चेंज इट इनटू द कॉस फंक्शन, दैट इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt. अब इसमें जो 2 है 1 by 2 बाहर आ जाएगा, वी विल गेट 1 by 2t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t 1 dt माइनस 0 to t cos 2 ओमेगा t dt. अब cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन. वी विल हैव in the first after solving we will get t minus 0 and in the second part we will get sin 2 omega t upon 2 omega 0 to t. और इस फंक्शन की वैल्यू sin 2 omega t upon 2 omega ये हमने पीछे करा है, its value is 0. So the average power comes out to the average value comes out to be 1 by 2 and the average power over the complete cycle comes out to be V naught I naught upon 2. अब हम 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. सो वी गेट V नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इंटू I नॉट अपॉन अंडर रूट 2. देयरफॉर द एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इन अ circuit containing resistor only is equal to RMS value of the voltage multiplied by RMS value of the current. So students, this is the graph showing the relation between the power, voltage and current of a circuit which contains only a pure resistance. Now here you can see this is the graph for the voltage and the dotted one is the graph for the current, and you can see that the current and voltage are alternatively positive and negative, but the power in the circuit is only positive because जो हमारी पावर है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज. तो जब दोनों RMS वैल्यू जो मीन जो RMS वैल्यू है जब वो दोनों नेगेटिव होंगी देन अगर दोनों नेगेटिव हैं देन ऑल्सो द पावर विल बी पॉजिटिव. सो ओवरऑल द पावर इन द प्योर रेजिस्टेंस सर्किट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड सर्किट, that is the circuit containing inductance and resistance. Now अब इस सर्किट में जो कि हमारा करंट है इट विल लैग द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ फाई. मतलब यहाँ पे दोनों इन फर्स्ट केस में तो करंट और वोल्टेज जो थे वो इन फेज थे, बट इन द केस ऑफ इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस सर्किट the voltage and current will not be in phase but the current lags the voltage by phi. So अगर हमारी voltage है V is equal to V naught sin omega t, our current will be I naught sin omega t minus phi and the formula for power is P is equal to V into I. So after multiply we get V naught I naught into sin omega t into sin omega t minus phi. Here we will apply the formula for sin A minus B. sin A minus B क्या होता है, sin A cos B minus cos A sin B. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin ओमेगा t cos phi minus
cos omega t sin phi. We will have, जब हम v naught I naught sin omega t अंदर multiply कर देंगे, we will get v naught I naught sin square omega t cos phi minus v naught I naught sin omega t cos omega t sin phi. अब जो सेकेंड टर्म है उसमें हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे बाय 2, तो 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी क्या हो जाएगा, sin 2 ओमेगा टी. सो वी गेट द फाइनल एज P is equal to V naught I naught sin square omega t cos phi minus half V naught I naught sin 2 omega t sin phi. In the expression of power, we have only two terms containing t, that is sin square omega t and sin 2 omega t. We have calculated earlier that over a full complete cycle, the average value of sin square omega t is 1 by 2. So, we only need to calculate the average value of sin 2 omega t, that is equal to 1 upon t 0 to t sin 2 omega t dt. Now, the integration of sin 2 omega t is minus cos 2 omega t upon 2 omega and limit is from 0 to capital T. So, we have minus 1 upon t into 2 omega cos 2 omega t minus cos 0 और omega की वैल्यू क्या होती है 2 pi by t. Here we will have cos 4 pi और cos 4 pi is 1 and cos 0 is 1. So 1 minus 1 we will get the answer as 0, means the terms containing the term sin 2 omega t will be equated to 0. So we are only left with the term v naught I naught upon 2 cos phi. इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है sin square omega t की over a complete cycle, that is 1 by 2. So the value of the average power comes out to be v naught upon root 2 into I naught upon root 2 into cos phi. Here cos phi is known as the power factor. The value of tan phi is omega L upon R, and from the impedance triangle we can find the value of cos phi as R upon under root of R square plus omega square L square. So we have seen that in the case of pure resistance, the average power comes out to be root mean square value of voltage into root mean square value of current. But in case of resistance and inductance circuit, the average power comes out to be root mean square value of voltage into root mean square value of current into cos phi, where cos phi is known as the power. Cos phi is the power factor. Now this is the graph showing the relation between I, V and P for a inductance resistance circuit. This is the graph for the voltage, this is the graph for the current, this is the graph for power. Now it also has some negative value as the value of cos phi lies between minus 1 to 1. So there will also be some negative value of power, but the positive value is greater than the negative value. So the overall the average power will be positive. So this ends your chapter alternating current. Okay students, now tomorrow we will start with electromagnetic waves. Okay students, that's all for today.